Okay, students, welcome to learning session number 3 of our chapter 4 of environmental management from Science 2 textbook. Okay, let us move ahead. These are the topics we have covered so far. Okay, we first saw, let me take out my laser. Yes, you all can follow this red color laser point. Okay, so first we covered ecosystem ka definition, then we saw types of consumers, primary, secondary, tertiary, apex. Then we saw food chain, we saw food web, which is a network of food chain. We saw ecosystem in detail, what are its various factors and examples. Then we saw trophic levels and energy pyramid. Okay. Next, these are the topics we're going to cover today. Okay, so first we'll see environment and its components. We'll also see ecology. We've already seen the definition of ecology. We'll just revisit that, and we'll see the relationship between environment and ecosystem. And lastly, we'll see factors affecting our environment. Okay, so these are the new words we're going to learn today. First is sustenance. I'll repeat that word: sustenance, supervision, disintegrate, depleted, prey. These are the new words we'll learn today. So just to recap what we had seen last time, let's solve this end of chapter question. Okay, end of chapter यानी हर chapter के end में कुछ questions दिए जाते हैं, right? So this is one of them. That's the first question there. Recognize the following food chain: grasshopper, snake, paddy field, eagle, frog. Describe the ecosystem to which it belongs. Okay, so this very easy question. Again, I would say pause the video here, take some time and write down your answers, and then after you'll continue the video, you can check your answers. Okay, so I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you all paused the video and have written the answers. Okay, so this is the answer to that question. Okay, so first, the sequence was wrong. Okay, so pehle I have corrected the sequence. The correct sequence of the food chain is first paddy field. Paddy fields are eaten by grasshoppers. Grasshoppers are eaten by frogs. Frogs are eaten by snakes. Snakes are eaten by eagle. Okay, that was the correct sequence. Then the food chain belongs to cropland ecosystem. Again, I told you what's the meaning of crop. Crop means हम लोग जो सब्जी वगैरह उगाते हैं, wheat उगाते हैं, rice उगाते हैं, those are known as crops. So cropland ecosystem. Okay, paddy is a type of rice. So this is a cropland ecosystem. Secondly, it is a man-made ecosystem. Okay, so man-made, हम लोग खुद बनाते हैं, right? हम लोग वहाँ पे plant करते हैं राइस को, wheat को, जवार को. So we are making that ecosystem. Next, this ecosystem relies on human efforts for its sustenance. Now this word has come, sustenance. तो sustenance का मतलब क्या? Maintain करना. Okay, अगर maintain नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा, right? It will get destroyed. So if you don't want it to be destroyed, then you will sustain it. Sustain यानी maintain करना, वैसे के वैसे रखना. So if you want this ecosystem to be sustained, then it relies यानी किस पे depend करता है? It relies on human efforts. Okay, so this ecosystem relies on human efforts for its sustenance. Without human intervention and supervision, again now this new word has come, supervision. Supervision मतलब क्या? Supervision यानी check करना and keeping an eye for any problems. Okay, just keeping a check, keeping an eye. So that is known as supervision. तुम लोग जब एग्जाम्स लिखते हो तो टीचर्स क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं. सुपरवाइज यानी क्या? चेक कर रहे हैं सब ठीक से हो रहा है कि नहीं. So without human intervention, intervention मतलब कुछ काम करना. Okay, humans काम कर रहे हैं, right? So human intervention मतलब humans working. So without humans working and checking, such man-made ecosystems will disintegrate. Disintegrate मतलब destroy हो जाएगा. Okay. In this given ecosystem, paddy crops in the field are primary producers that obtain energy from the sun. Okay, so the crops get energy from the sun and they use water and carbon dioxide to make that crop. This energy is transferred to the primary consumers, which is grasshoppers. Secondary consumers, which are frogs, feed on grasshoppers, which in turn pass on the energy to tertiary consumers, which are snakes. And at the top, apex matlab top, at the top, the apex consumers are eagles. This we had seen already in the last learning session, so I'm not going to explain it in detail. So that's your answer. This is an end of chapter question, so it can come in your
board exams. So ideally, you all should by heart this answer. Next. Next, we are seeing the relationship between environment and ecosystem. Okay. So first point is physical, chemical, and biological factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called environment. Okay, so this is the definition of environment. What's the definition of environment? Physical, chemical, and biological factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called as environment. Physical में क्या क्या आ सकता है? Physical factors में आ सकता है sunlight, rain, water, river. Chemical में क्या क्या आ सकता है? Chemical में soil में there are various chemicals present. So those could come under chemicals. Biological factors में क्या आ सकता है? Animals, plants, trees, all these will come under biological factors. So physical, chemical, biological factors affecting the living organism. So ये सब जो कुछ भी living है उसको affect करने वाले हैं, right? अगर बहुत ज्यादा sun होगा तो बहुत ज्यादा sunlight होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, and living wouldn't be possible. बहुत ज्यादा ठंड होगा, सब कुछ freeze हो जाएगा. So all these factors play or affect organisms, living organisms. So उसको एक साथ क्या बोलेंगे? Collectively यानी एक साथ. Collectively known as environment. Okay. So environment is the condition of the surrounding. यानी हमारे surrounding मतलब क्या? आजू बाजू. आजू बाजू कैसी हालात है? Condition यानी हालात. So आजू बाजू कैसे हालात है? That is going to be given by environment. So environment is the condition in the surrounding. Okay, उसमें क्या क्या include है? Biotic, abiotic, natural and artificial factors. So biotic we know it's living things, abiotic we know non-living things. Natural यानी जो nature से अपने आप से हो रहा है और humans कुछ नहीं कर रहे. Artificial को हम लोग man-made भी बोल सकते हैं. So artificial यानी जो कुछ भी man-made है. Okay, so factory लगाना, घर बनाना, all these are man-made, right? Next, there are two main types of environment. Okay, so first is natural environment and the other is artificial environment. Natural यानी already nature बनाता है, already होता है वो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं करते उसके लिए. Artificial environment is one which generally humans make, जो nature अपने आप नहीं कर रहा है. So natural environment के examples क्या है? Air, atmosphere, water, land, living organisms. ये सब nature में already present होता है. These are examples of natural environment. Environment में, as we had seen, biotic and abiotic, two factors are there, living and non-living. Let's move ahead. Again, next they have given the definition of ecology. Okay, ecological definition last time we देखा था. Quick review is the science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors. Okay, so living and non-living things में क्या interaction हो रहा है, कैसे interaction हो रहा है, that will be studied by the subject called as ecology. It's a science subject. Next, basic functional unit used to study ecology is ecosystem. So if you remember 9th standard में, when we were learning kidneys, we had learned how a nephron works. और the way nephron works is the way kidney works, right? Similarly, brain को पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था? न्यूरॉन. न्यूरॉन कैसे काम करते हैं एक बार समझ गया तो पूरा ब्रेन कैसे काम करते है ये भी समझ जाएगा. सो उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोल देते हैं. सो नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन. सिमिलरली इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम. ओके, सो इफ यू स्टडी ईच एंड एवरी इकोसिस्टम you will understand ecology very well. So that is the meaning of basic functional unit used to study ecology is ecosystem. Okay, and environment has many ecosystems in it. Okay, so environment क्या? सारे ecosystems को मिला के environment बनता है. Next, a small pond is an ecosystem, whereas Earth is the largest ecosystem. Okay, so ecosystems के अंदर भी ecosystems हो सकते हैं. So सबसे बड़ा ecosystem क्या है? Earth. Earth के अंदर forests होंगे, ponds होंगे, rivers होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, right? So ecosystems के अंदर भी ecosystem होगा और सबसे बड़ा ecosystem क्या है? अपना Earth. Next, environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles. So environment में जो balance है ये किसकी वजह से है? वेरियस नेचुरल साइकिल्स. ओके, नेचुरल साइकिल्स यानी वाटर साइकिल हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा है 5th 6th स्टैंडर्ड में. क्या कैसे होता है? वाटर फ्रॉम द ओशंस आर इवापोरेटेड, दोस गो इनटू द क्लाउड्स कम अबव अस एंड the water rains from the clouds. So the cycle is being completed. The water from the rain then goes to rivers goes meet the sea,
एंड वापस सी में पानी पहुंच गया, तो ये साइकिल है, राइट? जो ये जैसा साइकिल है वाटर का, देयर आर सिमिलरली there's a carbon cycle, there are gaseous cycles like nitrogen cycle, oxygen cycle. Every small component like water, carbon, nitrogen, oxygen have their cycles. Okay, वो अपने environment में हमेशा घूमते रहता है. So इसकी वजह से क्या है? Environmental balance. So environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles. ये natural cycles हमेशा चल रहे हैं, इसके वजह से environmental balance है. Environmental balance is also maintained due to various food chains of ecosystem. Okay, so हमने last time देखा है, right? Food chains, one thing is eating other thing, other thing is eating other thing. So अगर समझो एक भी कम हो गया तो पूरा बैलेंस खराब हो सकता है. So उसके वजह से भी environmental balance can the environmental balance can also go haywire, and they are maintained because of various food chains in the ecosystem. Okay, let's move ahead. Again, end of chapter question. टेक्स्ट बुक के पीछे का चैप्टर के पीछे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस. लीज मतलब क्या? लीज मतलब लोन लिया है, ठीक है? हम लोग का खुद का नहीं है, लीज लिया है. ओके, लोन लेके लिया है, भाड़े पे लिया है. फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल मतलब जो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, इनसे मिला है. ओके, एंसेस्टर्स यानी हमारे ऊपर जो थे, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा. सो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस. हमारे जो आगे के जनरेशन है उनसे भाड़े पे मिला है हम लोग को. एंसेस्ट्रल यानी हमारे पूर्वजों से प्रॉपर्टी नहीं मिली हम लोग को. इसको एक्सप्लेन करना है. ओके, take 2 minutes to think about this. You all will not know the answer, but you all can think about the answer. काफी general question है, so you can think about the answer. You can come up with your own points also. Okay, so the answer I've come up with is this. Okay, so firstly, human existence is dependent on the existence of nature. Everything we get is from nature, right? We get water from nature, we get food from nature, everything we get is from nature. तुम लोग जिस मोबाइल से देख रहे हो उस मोबाइल में प्लास्टिक यूज हुआ है, मेटल यूज हुआ है, बैटरीज यूज हुई है, ये सब भी हम लोग को नेचर से ही मिल रहा है, राइट? सो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इज डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. एंड नेक्स्ट, because our human existence is dependent on existence of nature, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. क्योंकि हम लोग नेचर पे डिपेंडेंट है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी जिम्मेदारी है टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. उसको वैसे के वैसे रखना, उसका जो बैलेंस है उसको खराब नहीं करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, if we use the natural resources too much, the resources will get depleted. यहाँ पे वर्ड क्या है? डिप्लीटेड. डिप्लीटेड यानी खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. ओके, सो इफ वी यूज नेचुरल रिसोर्स टू मच, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए तो खत्म हो जाएंगे. Thus, we should not forget to conserve it for ourselves and for our future generations. So, हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बचना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग ने फुल पेट्रोल यूज कर लिया और उनको बोल रहे सोलर पे अभी तुम लोग जी लो, या फिर हम लोग ने पूरा साफ पानी खत्म कर लिया और अभी उनको पानी नहीं है पीने के लिए, सेफ वाटर नहीं है. So we have to think about them also. So we should not forget to conserve it for ourselves, खुद के लिए भी conserve करना, and for our future generations also. Hence, it is said that we have got this earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors. Okay, so again also see मैंने कैसे उसको point wise लिखा है इस answer को. You all should also in the examination write the answer point wise. Okay, don't write a huge paragraph, write point wise and underline the important keywords. मैं जहाँ पे भी underline किया, bold किया, those are keywords. The examiner will only check the keywords. So अभी से आदत लगा लो, whenever you're noting down the notes, whenever you're writing the answers, writing practice कर रहे हो, write the answers point wise and underline the important keywords. Okay, let's move ahead. Next, page number 38 पे can you tell him. Okay,
So first question is, which factors affect the environment and how? Second, what will happen if number of consumers in environment goes on increasing gradually? Gradually matlab धीरे धीरे. What will be the effect of industry established on riverbank? What will be the effect of industry established on रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम? तो अगर रिवर बैंक के ऊपर, रिवर बैंक क्या है, दिस इज द रिवर, इसके आजू बाजू वाले साइड को रिवर बैंक बोलते हैं, राइट? सो इफ ऑन द रिवर बैंक एंड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड, एक फैक्ट्री समझो खड़ा कर दिया, तो रिवर का जो इकोसिस्टम है उस पे क्या अफेक्ट होने वाला है? ओके, अगेन pause the video, think about the answers, don't write the answers this for this question, just think about the answers, क्या क्या points तुम लोग सोच सकते हो for each of these three questions. Okay, actually you should write. I changed my mind. सोचो मत लिखो. Okay, directly write the answers, don't write the questions first. Write down what all points you can come up with, and again point wise. Okay, point wise और keywords क्या है ये देखो. I'll give you 5 seconds for this, and after 5 seconds I'll discuss the answers. Okay, I hope तुम लोग ने वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख दिए. Now we will see the answers one by one. Okay, so first question जो है ये कैन यू टेल का भी क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 से भी है. तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिया उसमें भी ये सेम क्वेश्चन दिया. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, दिस कैन कम इन एग्जाम. यहाँ पे ई आना चाहिए था. लेट मी ट्राई टू करेक्ट इट. So very bad E. It looks like an E, I hope. So it's the, okay, not TH. So first point, the factors affecting the environment can be natural or artificial. Natural मतलब जो नेचर से हो रहा है, आर्टिफिशियल जो नेचर से नहीं हो रहा है, यानी हम लोग से हो रहा है, मैन मेड. सो ये दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स के क्या एग्जांपल्स है? नेचुरल फैक्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ड्राउट्स. ड्राउट्स यानी क्या, बहुत टाइम से अगर बारिश नहीं हुई होगी, बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए बारिश नहीं हुई है, तो वील से कि वहां पे एक ड्राउट आ गया. ओके, सो नेचुरल फैक्टर्स के एग्जांपल्स क्या है? अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ड्राउट्स एटसेट्रा कैन एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट. एडवर्सली यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल और मैनमेड फैक्टर्स के एग्जांपल्स क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो हमारे एसी से जो धुआं जाता है, कोल प्लांट से जो धुआं जाता है, गाड़ियों में से जो धुआं जाता है, ऑल दोस कंसिडर टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी एक्सप्लोजन मतलब क्या? एकदम कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, राइट? सिमिलरली एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या? एकदम कम समय में बहुत ज्यादा population बढ़ जाना. So if the population is more, then more water will be needed, more energy will be needed, more food will be needed. So pollution increases because of population explosion. Deforestation. Okay, so forestation का मतलब क्या है? फॉरेस्ट को बढ़ाना, फॉरेस्ट बनाना. डिफॉरेस्टेशन मतलब उसका उल्टा, यानी फॉरेस्ट को काटना. ओके, सो डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? You all must have heard the words urban and rural. Rural मतलब गांव वाला एरिया, urban मतलब सिटी वाला एरिया. So Mumbai is an urban area. So unplanned urbanization मतलब कुछ प्लानिंग नहीं किया, फिर भी वो जो सिटी है वो बहुत बड़ा हो गया बहुत कम टाइम में. So that's called as unplanned urbanization. So what was this third point? Artificial or man-made factors like environmental pollution due to population explosion, deforestation and unplanned urbanization can harm the environment. ये सबसे environment को बहुत harm पहुंच सकता है. Last point, biotic and abiotic factors are related to each other in an ecosystem. This again, we've already seen this point. I'm not going to explain that. And if any of the factors is changed or removed, it can affect the entire ecosystem and further affect the environment. Again, this also we have seen. अगर कोई भी एक चीज हटा दी बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर को, तो पूरा जो चेन है वो खराब हो सकता है, पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है. So उसके वजह से इकोसिस्टम पे अफेक्ट होने वाला है. And because environment क्या है? Environment में there are many ecosystems. So if the ecosystem is affected, the environment will also be affected. So that's your answer to the first question. Let's move ahead to the second question. What will happen if the number of consumers in environment goes on increasing gradually?
सो there's an environment जहाँ पे कंज्यूमर्स यानी क्या, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, एपेक्स कंज्यूमर्स, ये लोग सब लोग का जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ने लग गया धीरे धीरे, ओके, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, दिस इज अगेन वेरी इजी, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन इट. फर्स्ट क्या है? If the number of consumers in an environment goes on increasing, there will be a decline in the number of prey they feed on. So what is the meaning of the word prey? Prey मतलब किसी भी जानवर का जब शिकार होता है, जिसका शिकार हो रहा है उसको प्रे बोलते हैं. सो इफ टाइगर इज ईटिंग अ डियर, डियर इज द प्रे. ओके, सो जिसको भी हंट करके मारा जाता है, दैट इज नोन एज प्रे. सो ऑल द कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंग, राइट? टाइगर, लायन वगैरह ये सब बहुत इंक्रीज हो रहे हैं. सो क्या डिक्रीज होने वाला है? क्योंकि ये लोग इंक्रीज हो गए, इनका खाना क्या है? इनका खाना है इनका प्रे. So that number is going to decline. Decline यानी कम होने वाला है. That's the first point. Decline in the number of prey will result in decline in the number of ecosystem. क्यों? prey को ये लोग खाते हैं. So बहुत ज्यादा consumers हो गए, तो ये लोग जिनको खाते थे prey, उनका population कम हो गया. तो इनका population कम हो गया prey का, तो अभी consumers क्या खाएंगे? So अभी इनका खाना ही कम हो गया, तो consumers का भी population धीरे धीरे कम हो जाएगा. ओके, सो इफ यू सी, दोनों रिलेटेड है. पहले प्रे कम होगा, प्रे कम हो गया, सबसे पहले क्या हो रहा है? कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं. कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं तो उनका खाना यानी प्रे कम हो रहा है. खाना ये मतलब प्रे इनका कम हो गया, तो इनका भी पॉपुलेशन कम होना पड़ेगा. तो जैसे ही द पॉपुलेशन ऑफ प्रे डिक्रीजेस, द number of consumers also will decrease. So what's at the end, what is happening? It is causing an imbalance in the ecosystem. Ecosystem का जो balance है वो खराब हो रहा है. So this is your answer. Okay, first decline in the number of prey, then decline in the number of consumers because lack of food, and hence it will cause an imbalance to the ecosystem. So that's your answer number 2. Next, third question: what will be the effect of industry established on river bank on the river ecosystem? रिवर बैंक के ऊपर अगर एक इंडस्ट्री लगा दी, तो रिवर का जो इकोसिस्टम है उसमें क्या अफेक्ट होने वाला है? ओके, so first point, if an industry is established on a river bank, the waste water from the industry is discharged. Discharge कर देना यानी whenever someone is discharged from the hospital यानी तुम लोग जा सकते हो, right? छोड़ देते हैं. So discharge करना यानी छोड़ देना. Okay, so क्या छोड़ रहे हैं? Waste water. Waste water from the industry is discharged into the river water. It will cause water pollution and affect the components of ecosystem as well as human life. So what is going to happen? अगर रिवर बैंक के ऊपर एक इंडस्ट्री लगा दी, तो उसका जो कुछ भी वेस्ट वाटर है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज यानी छोड़ दिया जाएगा इन रिवर वाटर. रिवर वाटर में अगर ये वेस्ट वाटर छोड़ दिया, तो वाटर पोल्यूशन होने वाला, एंड बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ दोनों को प्रॉब्लम होने वाला है, दोनों पे अफेक्ट होने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट, discharge of industrial waste increases the amount of harmful chemicals in the river water. So इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, और अगर हार्मफुल केमिकल्स पानी में बढ़ गए, सो पानी में जो हार्मफुल केमिकल्स का क्वांटिटी है वो इंक्रीज होने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर विल नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, सो अगर पानी में बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स है, तो उसको हम लोग पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, राइट? So it cannot be used for drinking. Next, this will also affect aquatic life and animals living around the rivers. So उसके अंदर जो फिश है उनको भी प्रॉब्लम होने वाला है, उसके अंदर जो प्लांट्स है, रिवर के अंदर जो प्लांट्स है उनको भी प्रॉब्लम होने वाला है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये जो इकोलॉजी का बैलेंस वो खराब होने वाला है. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. So these are the words we have learned today. First is sustenance. Sustenance यानी maintain करना. Supervision यानी oversee और keeping a check. Disintegrate यानी decay या destroy होना. Deplete यानी exhaust, finish, खत्म हो जाना. Prey यानी the animal which is hunted and killed by another food. Actually last इसमें हम लोग ने ये भी देखा था, right? Discharge. Discharge is also an important word. Okay. Discharged. So discharge का मतलब क्या है? छोड़ देना. To leave something. So these are the words we have learned today. And yeah, that is it.
Hope you guys understood the learning session, and see you guys in the next one. See you guys. Bye.